Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 7th and 8th of September. The session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Semicon India, that is related to semiconductors, and during this Semicon India Vikram 32 microprocessor has been unveiled. We will be discussing about it. Then we will be talking about India's birth and death rates. Then Agnikar 2025 campaign has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. It was launched under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0. We will be discussing it, and then we will be talking about the disbursement that has been dropped to 24% year on year by MFIs, that is your microfinance institutions, right? And this is for the first quarter of FY26. All these things and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Students, we upload the daily current affairs at 5 a.m. in the morning on regular basis, which will be quite beneficial for you all, as the content provided here is in a refined way. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First is Prime Minister Narendra Modi. This is the third term of Prime Minister Narendra Modi, and he was on a visit to SCO summit that was held in Tianjin in China. Right? First thing you need to know. Then recently he inaugurated Semicon India 2025 in New Delhi. This Semicon is related to which sector? It is related to semiconductors. In today's world, the semiconductor chips are making a comeback, or not just comeback, because we need to understand that India was not in a position where we were manufacturing a lot of semiconductor chips. We used to depend on other countries for the import of these chips, right? As in today's world, we are seeing that electronic devices are growing. Each electronic devices, they require this semiconductor chips. So in order to reduce the dependence from other countries and to start and manufacture those chips in India, which we can cater to the in-house demand, and also then export these chips to different parts of the world. For keeping this in mind, India is now betting heavily on these semiconductor chips, and recently this Semicon India was inaugurated, right? And where was this? Location is important, students. It was at Yashobhumi. Where is this Yashobhumi? Yashobhumi is your India International Convention and Expo Center that is located in New Delhi. First thing, right? This Semicon India conference, right? It was held from when to when? It was from 2nd to 4th of September in New Delhi at Yashobhumi. Then during this, there is a theme that you need to remember, theme being building the next semiconductor powerhouse. This is the theme here, students. You can see building the next semiconductor powerhouse is the theme here, right? Apart from this, during this Vikram 32 microprocessors was launched, that is the first made in India chip, and Ashwini Vaishnav, he presented this Vikram 32 during the India, that is India's first indigenous 32-bit semiconductor microprocessor, to Prime Minister Narendra Modi. Very important, students, take a note of this, right? Then apart from this, if we talk about the outcomes of the Semicon, during this 13 major announcements showcased India's fastest progress towards emerging as a global semiconductor powerhouse. One more thing, if we talk about which is the semiconductor manufacturing hub in India, it is Gujarat state. So question can be asked, which is the state leading in manufacturing of semiconductors? It is Gujarat. One more thing, Gujarat is also the state that is exporting the maximum in India. So if asked which is the state leading in the export, it is Gujarat. Correct? Take a note of this. Apart from this, one more thing, remember Tata Electronics, right? They have recently signed a memorandum of understanding with Merck. This Merck, it is a global leader in the semiconductor materials and solutions, and with them they are strengthening the semiconductor fabrication unit that has been set up at Dholera. So question can be asked that Tata Electronics, they set up a manufacturing hub where? In Dholera, Gujarat, and we saw that India is leading, Gujarat is the manufacturing hub, and also the export is being done here, and in Dholera, Gujarat, the Tata is setting up their electronics plant that will help to cater the supply chain, and also the workforce development will be taken care here. Right, students? So take a note of this. So what we discussed so far, we talked about Semicon India. This was held where? At Yashobhumi in New Delhi.
Before this was the fourth edition of it. Previous to this, the first edition was held in Bengaluru, Karnataka. Second edition was held in Gandhinagar, Gujarat in 2023. Third edition was held in Greater Noida in 2024, and fourth edition was held at Yashobhumi, and it was from 2nd to 4th of September. Organized by India Semiconductor Mission, MEITY and SEMI. And during this, Vikram 32 microprocessor was launched. That is the first made in India microprocessors. So all these things are quite important. Next is SRS 2023 report. What is SRS? SRS is your sample registration system, right? This is the report that has been released, and it is talking about India's birth and death rates. See, we know that our country is the most populated country in the world. We overtook China, so India is on the first position now. Then comes China, and this large population is somewhere good for us also and bad for us also, because we need to take care of a lot of people, right? And the good part is that we have a lot of workforce that can contribute to the development of the economy. So we need to know that how much birth is going on, what are the death rates, right? And in order to this SRS report was released, right? If we talk about this, the top 5 states or union territories, if we see, the birth rate stood of Bihar at the first position, that is of in 2023. This is the data for 2023, right? And it is the highest among all the states and union territories. On second position was UP, third Rajasthan, fourth Madhya Pradesh, and fifth Chhattisgarh, right? The states that were at the bottom was Andaman and Nicobar, followed by Kerala, Tamil Nadu, Punjab, Maharashtra, West Bengal, and so on. This is, we are talking about birth rate. So which state topped in the birth rate? It is Bihar. If we talk about the death rate, which state topped in the death rate? It is Chhattisgarh, that has the highest death rate of 8.3 compared to all states and union territories. So in terms of death rate, first Chhattisgarh, second Odisha, third Kerala, fourth Punjab, fifth Andhra Pradesh, and sixth Karnataka, right? Take a note of these, students. It is important. Correct? Then one more thing, this report was released by whom? It was released by the Registrar General and the Census Commissioner of India. So this is the important thing that you need to remember here, right? Apart from this, recently NHAI, they have launched a FASTag of 3,000 rupees for an year, in which 200 toll crossing are allowed in a particular year. Good thing, right? Then next thing, recently Atal canteens were launched. Atal canteens. These Atal canteens were launched by whom? It was launched in Delhi by the Delhi's Chief Minister Rekha Gupta. And these Atal canteens, they will be serving food at just 5 rupees. A good initiative. Next is Ministry of Housing and Urban Affairs. They have launched Agnika 2025 campaign under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0. What was this Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0? The aim of this scheme was to basically provide housing, affordable housing to the people, right? And here Ministry of Housing and Urban Affairs, they have launched now this Agnikar campaign, right? This Agnikar campaign will be starting from 4th of September and it will be running till 31st of October. What is the main aim of this campaign, right? Why was this campaign launched? This campaign was launched basically in order to implement this Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 and create about the awareness of the scheme across India, right? This campaign will raise awareness through door-to-door visits, community mobilization, outreach channels, various camps will be there, right? Melas will be conducted and people will be talked about the benefit of this scheme, that how you can make loan or take a housing loan in order to afford your houses, right? If we talk about this Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0, initially, right, this scheme was launched to provide affordable loans to the or affordable houses to the people, so that each individual can have a house. This is the second version we are talking about. If we talk about the first edition of it, it was launched in 2015 with an aim to provide pakka houses or affordable houses to the eligible urban India, and their campaign target or the vision for them was provide housing for all by 2022. Correct? Take a note of it. Then next thing, this second version, the target of was extended to 31st of December 2025, which is the ministry that is looking after here, Ministry of Housing and Urban Affairs. So for both of them individually, the question can be asked that Agnikar campaign 2025 was launched by which ministry, or which is the nodal ministry, or which is the ministry that is looking after this campaign? It is Ministry of Housing Affairs. And similarly, Prime Minister or Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 is an initiative launched by which ministry to help and provide pakka houses or affordable houses to the individuals? It is Ministry of Housing and Urban Affairs. Next, one more thing, students. If I ask you about India's first
silicon photonics based quantum RNG. This was licensed, or this was licensed to whom? So IIT Madras licensed it, right? Which operation was recently added to the NCERT syllabus recently? It is Operation Sindoor. Your homework is to tell me when this Operation Sindoor was carried out, right? Then apart from this, tell me recently, if I ask you, UIDAI, they have partnered with which organization for Aadhaar based customer verification? For Aadhaar based customer verification. So UIDAI, they partnered with Starlink, right? Then one more thing, this Aadhaar card, it is a 12-digit number. Similarly, if I ask for the DigiPin, this is a 10-digit number, alphanumeric code, right? Next, here you can see Agnikar campaign will run from 4th September to 31st of October, as we just saw here, to accelerate this scheme. And Pradhan Mantri Awas Divas on 17th of September, and Awas Mela Shahri will be from 17th to 27th of September, and then again from 16th to 31st of October. Moving on. Next, here you can see both the things. Prime Minister Awas Yojana Awas Divas on 17th of September, this can be asked, and Awas Mela Shahri in two phases that we just discussed, that is from 17th to 27th of September and 16th to 31st of October. Next students, we are talking about banking and finance. MFIN, that is your Microfinance Industry Network India, right? They have this is an umbrella organization of the microfinance institutions, and they have recently released the 54th edition of the micrometer as on 30th of June. So this 54th edition of this report was released, right? And who released it? It was released by Microfinance Industry Network of India, correct? Here we are talking about what? Why this report was released? First thing, remember, if we talk about the asset under management for these microfinance institutions, it is 1,34,574 crore rupees as of 30th of June 2025, correct? And here they are saying that this AUM has this is for 30th of June 2025. So they are saying that the AUM has been decreased by 16.4% if we compare to 30th of June 2024. So this is a decrease of 16.4%, right? Here, if we see here, so the client base also, they have contracted. That means the people that used to invest here has been contracted to 3.8 crore. That was earlier 4.5 crore. Correct. Then apart from this, the loan amount in the first quarter was disbursed was 22,805 crore rupees. This is the loan that was disbursed, right, according to the first quarter of FY26, right? Then further, students, you need to understand that SMEs, right, small help groups, women small help groups, right, these and various welfare schemes, right, these are the major contributor. We are seeing that these, in order to grow MSMEs, right, if you are a MSME owner, right, you need to grow, so you need to have money for your operations, right? So in that, lot of loan is being provided, lot of loan is provided to the farmers in order to grow. Various welfare schemes are being launched where a lot of money of India is going. Then apart from this, we are seeing in the agriculture sector also a lot of funding is being provided in order to grow that sector, because in today's world, AI, machine learning, then satellite data, then drones, UAVs, these are being used, IoT devices are being used in order to launch this, and we are seeing various agri-tech startups that are coming into play and helping these. So all these things, they require loan, and it will be very beneficial for them, and these are the microfinance institutions that are funding all these startups, all these companies in order to grow and provide better services, right? Then there are certain terms that you need to remember, that is debt financing. So this NBFC microfinance institution, they have received a total of 12,781 crore rupees in debt funding during the first quarter. That is a 19.9% decline compared to the first quarter of FY25. If we talk about the debt breakup, bank contributed to 81.9% of the total borrowing, non-banking entities contributed 8.4%, all India finance institutions contributed 3.6%, external commercial borrowing accounted for 3.5%, and others 2.6%. Right? So take a note of these things that you need to remember, right? Then the top states, or if we discuss about the top states in terms of the portfolio outstanding here, Bihar has the highest loan with 54,666 crore rupees, followed by Tamil Nadu and UP on second and third position, right? You need to know this. Next is Amazon has acquired Axio for $200 million to expand the digital lending business in India. So who acquired? It is Amazon. They have acquired Axio
For how much amount? For 1762 crore rupees, or we can say $200 million. Correct? And here NBFC license was granted to them by RBI, and we have seen that now Amazon will be able to provide buy now, pay later, as well as the loan services with the help of their company or service, that is Amazon Pay. Correct? So take a note of this, important. Right? So Amazon India, they acquired this buy now, pay later. They are now being granted with these services, right? And this is for the next 6 years that they will be provided with this facility with the help of Amazon Pay. Then one free zone passport. One free zone passport. This was launched by whom recently? It was Dubai. Next is economy and business. BHEL, that is Bharat Heavy Electricals Limited, that is a Maharatna PSU under the Ministry of Heavy Industries. They have signed a 10-year memorandum of understanding with Singapore-based Horizon Fuel Cell Technologies to jointly develop hydrogen fuel cell-based trains tailored for the Indian market. That means we can say that these trains, they will be working on which fuel? Hydrogen fuel. And we have also seen that the buses were launched that will be running on hydrogen, and where they were launched? In Leh Ladakh. Who launched it? It was launched by NTPC. Why hydrogen, students? Hydrogen is used because it is considered a clean fuel, right? On its burning, water is released in the form of vapors as a byproduct. So carbon dioxide, carbon monoxide, these are not released. So it is a relatively clean fuel. Next, and this time period here is, you can see, for 10 years. Next is NGEL, that is your NTPC Green Energy Limited. It is a subsidiary of NTPC only. They have signed an MOU with VOC Port to establish green hydrogen fueling station in Tuticorin, Tamil Nadu. See, again, we are talking about green hydrogen, students. What we just discussed. Green hydrogen is considered a fuel very important for India's growth also. We are heavily betting on this as it is considered a clean fuel, and in future we will be seeing that our vehicles will also be running on this fuel, right? And for this we are seeing that an MOU was signed between these two organizations. A very crucial thing and a very crucial step that we have taken in this field. Correct? Next, students, awards and recognition. NIRF ranking 2025 was released, and here IIT Madras, they have topped in the overall category for the 7th consecutive year. First thing first, what is this NRIF? That is your National Institutional Ranking Framework, and this is the 10th edition of this NIRF ranking was released. It was released at Bharat Mandapam in New Delhi. Right, these ranking, they are in different sectors, or they are in the different fields. Say for example, law, engineering, right, overall category, right, university wise ranking, and many more. Let's go and discuss few of them. Rest you can refer our PDF. If we talk about the overall category, it is IIT Madras of Chennai, Tamil Nadu that secured the first position, followed by IISc Bangalore, IIT Bombay, and IIT Delhi on 4th position. If we talk about university wise ranking, right, if we talk about the university wise ranking, here you can see IISc Bangalore secured the first position, then Jawaharlal Nehru on 2nd, Manipal Academy on 3rd, Jamia Millia Islamia on 4th, and University of Delhi, that is DU University, on 4th position, right? Then if we talk about research institutions that are taking place, so IISc Bangalore secured the first position in research institutes. If we talk about engineering college, IIT Madras secured the first position. If we talk about the management, it is IIM Ahmedabad that secured the first position. Then if we talk about pharmacy, it is Jamia Hamdard University that secured the first position. If we talk about medical, it is AIIMS Delhi that secured the first position. Then if we talk about dental, it is AIIMS Delhi again that has secured the first position. Then if we talk about law, that is your NLU, National Law University, right, they secured the first position. So these are some of the universities and their ranking that you need to remember, and this was the 10th overall ranking of NIRF that was recently released at Bharat Mandapam in New Delhi. Next is appointments and resignation. Andrew Michael Holness re-elected as the Jamaican Prime Minister for the 3rd term. So directly remember this. So if we talk about Delhi Police Commissioner, who has been appointed here? Satish Golcha. Then if I ask you who has been appointed as who has been re-elected to the post of the President of Boxing Federation of India? Ajay Singh.
Right, students, take a note. And this is, if we talk about Andrew Holness, this is the third term here. Next, acquisitions and mergers. Dassault Aviation, they have raised additional 2% stake in DRAL to 51%. Earlier, they were having 49% stake and 2% stake can be raised now. So the total becomes 51%. Directly remember this. Direct question can be asked about how much stake was raised. And for 2%, how much did they pay? They paid 176 crore rupees or $20 million. Now, Reliance Aerostructure, they hold 49% here. Next is science and technology. China, they have unveiled JL-1 air-launched ballistic missile in military parade. Right? This is the missile that has been launched here. The range of it is almost 8,000 kilometers. Right? And where was this launched? In Beijing, China. And you can see here that this GL1 or Jingli-1 is a nuclear capable ALBM designed to be launched from H-6N bombers equipped with in-flight refueling capacity, and 8,000 km is the range here. Next is related to sports. Union Minister Mansukh Mandviya has launched a mascot that is Jalveer and logo for the Asian Aquatics Championship 2025. First question, which edition of this Asian Aquatics Championship will be held? It is the 11th edition. Where it will be held? It will be held in New Delhi. Right? So very important, right? And here, what is the mascot? Mascot name is Jalveer. And what is the logo? Logo here has been launched. Correct? And this logo is of Asiatic lion, as you can see it in the picture here, with the symbols of swimming, diving, water polo and artistic. Here you can see various events that has been showcased in the hair of a lion. And what is the mascot? Mascot is Jalveer. 1,000 plus participants will be participating here. 30 plus countries will be participating here. And who is organizing this? It is being organized by Ministry of Youth Affairs and Sports. Right? Very important, students. So take a note of it. So we are talking about 11th edition of the Asian Aquatics Championship, scheduled to be held from 28th of September to 11th of October. And important is the venue, that is Ahmedabad, Gujarat. Next is books and authors, students. General Upendra Dwivedi, the Chief of Army Staff of the Indian Army, has launched a book titled Operation Sindoor, The Untold Stories of India's Deep Strike Inside Pakistan. It was authored by whom? It was authored by Lieutenant General KJS Dhillon. That is your Lieutenant General Kanwaljit Singh Dhillon. He is a retired. And this was launched where? It was launched at the Manekshaw Center in New Delhi. This book will be published by whom? It will be published by Penguin Random House, India. Important, students, so take a note of it. Then let's move to the important days. World Duchenne Awareness Day is observed on 7th of September. This day is observed every year on 7th of September to raise awareness about Duchenne and Becker muscular dystrophy, a rare genetic disorder that progressively weaken the muscles. And this year it was the second edition of this day that was observed. Then there is a theme here. Family, the heart of care is the theme here. Right? And one more thing, as you can see it in the picture here, students, multiple balloons are being released. So people release thousands of red balloons in order to honor this day. Then let's move to state news. Government of Odisha, they have partnered with TCS to design and implement IFMS 3.0. IFMS is your integrated financial management system. This will automate Odisha's public finance workflows, enhance precision and transparency, and empower the officials with AI-assisted insights for confident data-driven decision making. See, one more thing, students, a big update that recently USC is saying and that the IT jobs, they will be not outsourced to India now, right? And even the IT softwares that will be exported, they will be also having a tax, right? They will on that also various tax will be imposed. So let's see how that plays out, but you should know about this. And it was TCS which are planning on laying off 12,000 employees this year. Moving on. So we are see that it is Government of Odisha and TCS for the designing and implementation of IFMS 3.0. So that's all for the day, students. I hope the session was beneficial for you all. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. The first ever grassland bird census was released has been released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in July. That was conducted in which national park? So the first ever grassland bird census was conducted in which national park? It was held in Kaziranga National Park. Where is this located? It is located in Assam, right? The first ever grassland bird census in Kaziranga
National Park it was held? It was held from 18th of March till 25th of May and held in Assam. Correct. Next, mark the correct statement regarding the Prime Minister Narendra Modi's visit to Varanasi, UP on 2nd of August. If we look at the option here, option A is right and C is right, B is wrong. B is saying that PM Modi inaugurated 37 rural drinking water schemes under Jal Jeevan Mission along with purification project at Ramkund, Mandakini and Shankuldharara Kunds. So is it correct? So no, he did not inaugurated 37 but 47 rural drinking water projects. Now all are right. Next, where was the Maitri 1 initiative, that is a 750-acre theme-based forest project jointly launched by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav and Union Minister of Housing and Urban Affairs in August 2025. Where was this Maitri 1 launched? This was launched in Aravalli Hills, right? And this is the Gurugram, Haryana, where in Aravalli Hills this Maitri 1 initiative was launched, right? This is a 750-acre theme-based forest project that has been launched. Next, and one more thing, this Maitri 1, this comes under Ek Ped Maa Ke Naam initiative. Next, the Government of India registered the Multi-State Sahakari Taxi Cooperative Limited, that is a consortium of 8 cooperative organizations to launch a taxi service under the brand name Bharat. Which one of the following cooperatives is not a part of this consortium? So which of the following is not a part of this consortium? National Cooperative Housing Federation of India is not a part of this consortium, right? This newly announced initiative, it is supported by 300 crore rupees authorized capital and have already onboarded 200 drivers, 50 each from 4 states, that is Delhi, Gujarat, UP and Maharashtra, and this will be coming in a competition to Ola and Uber. So this is a taxi service launched by the government. Next, under which mission did the Ministry of Mines reorganize 7 institutes including 4 Indian Institutes of Technology and 3 research and development labs as the center of excellence? So under which mission did the Ministry of Mines recognize 7 institutes? So it was under the National Critical Minerals Mission. Next, which of the following program is not among the 4 development projects launched in the first phase of the India UN Global Capacity Building Initiative in August to achieve the Sustainable Development Goals for 9 partner countries? So which of the following program is not among the 4 development projects here? So among the following, renewable energy development and grid management is not among the 4 development projects here. Next, identify the organization that released the project titled India Electric Mobility Index, that is IEMI Index, that tracks the electric mobility trends in the Indian states in August 2025. So question asked is, identify the organization that has released this IEMI Index. So this was launched by Niti Aayog. Correct. This IEMI, it tracks, it evaluates and scores all Indian states and union territories out of 100 across 16 indicators and 3 crore themes. Next, name the organization that organized the first ever BIMSTEC Traditional Music Festival inaugurated by Union Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar on 4th of August in New Delhi. So name that organization, or name the organization that organized this first ever BIMSTEC. It was by Indian Council for Cultural Relations, right? And take a note of this, students. The event was held under the theme Sapta Sur, that is 7 nations, 1 melody. Sapta Sur, that means 7 nations, 1 melody, right? Next, name the first common central secretariat building inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in August to streamline the administrative processes under Central Vista Redevelopment Project. It is Kartavya Bhavan 03. This is the first common central secretariat building inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Next is mark the correct statement regarding the Defence Acquisition Council chaired by Union Minister Rajnath Singh, which approved the proposal worth 67,000 crore rupees on 5th of August. If we look at the options A, B and C, all are right. Next, the Indian Navy participated in the 32nd edition of SIMBEC exercise to strengthen the maritime cooperation between India and Singapore. So this SIMBEC exercise, India and Singapore, and that too 32nd edition. Where was this held? Location? It was held in Singapore. Next, according to the International Air Transport Association,
World's Air Transport Statistics 2024 report has been released in August. What was India's rank among the world's largest aviation market in terms of passenger traffic? So India stands at fifth position in terms of the passenger traffic globally, right? And with we are handling close to 211 million passengers, right? And this is an increase of 11.1% compared to year 2023. Now your homework is to tell me which is the country that secured the first position here, right? Name that. This is your homework. Next, mention the country that became 107th member of International Solar Alliance in August. So which is that country? It is Moldova. International Solar Alliance, this is an organization that is helping the countries, underdeveloped countries, in order to provide them with proper infrastructure for electricity, because they do not have cables and everything, right? Grids are not there. So with the help of the solar panel, electricity is being provided in those remote areas. The headquarter of International Solar Alliance, it is in Gurugram, Haryana. Next, according to the Global Artificial Intelligence City Index released by the Counterpoint Technology Market Research in August, which of the following cities is not among the top 5 AI cities globally? So here Paris, right, is not among the top 5 AI cities globally. Singapore, Seoul of South Korea, Beijing of China, Dubai, and then San Francisco. Right, in this order: first, second, third, fourth, and fifth. And Paris is not among the following here. Next, SEBI, they have extended the timeline for the implementation of the second and third phase of their new nomination framework in dash. It was in the securities market, right, that originally issued on 10th of January and later amended on 28th of Feb. Next, mark the correct statement regarding the UPI guidelines issued by National Payment Corporation of India in May 2025. If we look at the option A is right, B is right, C is wrong. Next, in August, IDFC First Bank Limited and Indigo, they have launched a new credit card named Indigo IDFC First Dual Credit Card. This newly launched dual credit card offers both Dash and Dash credit card with a common credit limit. So it offers both MasterCard and RuPay. So, right, see here operators are being asked. So these questions can also be asked in this way. Next is identify the correct statement regarding the 3 schemes that have been announced by RBI that aims to boost the financial inclusion among the consumer. So we have to find the correct statement among the following. If we see here, B is right, C is right, A is wrong. A is saying that as per the RBI direction, all the banks will conduct doorstep banking camps from 1st of August to 30th of September at Panchayat level. Is it correct? So the date is not right. It is from when? It is from 1st of July, not August, from 1st of July to 30th of September. Now all the options are rightly mentioned. Next, name the digital foreign exchange platform launched by Bank of Baroda in August, which is tailored for corporate and MSME customers. So name that forex platform. What is that? It is Bob FX1. Right, this is the platform that marks a major leap in digitizing the treasury options and forex dealings for business clients, enabling a seamless, transparent, and efficient experience. Next, identify the bank which became the first in the industry to launch Lock FD feature with an aim to protect fixed deposit from digital fraud. This has been launched by Axis Bank. Next, in August, Tata AIA Life Insurance Company Limited, they have launched a dash. They have launched a Shubh Shakti. This is a term insurance plan particularly designed for women to encourage the participation of women in the insurance sector. Right, so Shubh Shakti has been launched by Tata AIA Insurance Company. That is a joint venture between Tata Sons Private Limited and AIA Group. Next, in August, Antfin of Netherlands holding BV exited which company by selling their stake of 5.84%, that is 3.73 crore shares for 3,803 crore rupees. So it is Paytm, right? They have exited in this is right, that is Antfin holding BV, they exited Paytm by selling 5.84% stake for 3,803 crore rupees. Next, in August, Dash successfully completed the issuance of unlisted non-convertible debentures in India's airport sector, raising a total of 9,000 crore rupees. So, in August, the Bangalore International Airport Limited, they successfully completed the issuance of unlisted non-convertible debentures in India's airport sector, right? So, these bonds have been issued here worth 9,000 crore rupees.
Next, identify the correct statement regarding the 71st edition of the Fortune Global 500 list for 2025 released by American global business magazine Fortune in July. If we look at the option here, you have to give me the right option. So option A, B and C, all three of them are rightly mentioned. Next, mark the incorrect statement regarding the winners of the 71st National Film Awards for the year 23 as announced by the jury in August 2025. If we look at the options here, you can see here which of the following is right. It is option 2, that is the Hindi film 12th Fail directed by Vidhu Vinod Chopra received the best non-feature film award here. Next, Prime Minister Narendra Modi's flagship platform Pariksha Pe Charcha was conferred with the Guinness World Record on the title Most People Registered on a Citizen Engagement Platform in 1 month. Right, this recognition, it marks the accomplishment of what? It accomplishment of 3.53 crore people that has registered in 1 month during the 8th edition of this Pariksha Pe Charcha program. So this was a world record in itself. Right, and this was during the 8th edition of Pariksha Pe Charcha. Next, who was appointed as the 13th Prime Minister of Myanmar to lead the new interim government? So, Yu Nyo Shaw, right, was appointed as the 13th Prime Minister of Myanmar. Next, in August, who was appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of IndusInd Bank Limited for a period of 3 years, succeeding Sumant Katpalia. So, Rajiv Anand, right, was appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of IndusInd Bank for a period of 3 years, and he succeeded Sumant Katpalia. Next, which cooperative bank is set to merge with New India Cooperative Bank following the approval of RBI effective from 4th of August? So, which cooperative bank is set to merge with New India Cooperative Bank? It is Saraswat Cooperative Bank, right? Take a note of this. Next, identify the correct statements regarding the launch of NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, that is NISAR satellites from Sriharikota, Andhra Pradesh in July 2025. So, identify the correct statements here. All these three options are rightly mentioned. Next, name that Indian naval ship built by GRSE that has received the Indian Navy. That has been received by Indian Navy in Kolkata, West Bengal in July. So, they name that Indian naval ship. Which is that Indian naval ship? That is INS Himgiri. Next, in August, SpaceX, they successfully launched the 11th operational astronaut mission for NASA to International Space Station using the Crew Dragon Endeavour spacecraft on Falcon 9 rocket. Who among the following was not a part of this astronaut crew? Among the following, if we see here, Thomas Pesquet, right, was not a part of this astronaut crew. Zena Cardman of USA, Mike Finke of USA, Kimya Yui of Japan, and Oleg Plantonov of Russia. Next, the Indian Army, they have signed a memorandum of understanding worth 223.95 crore rupees. It was signed with Exidase Aerospace and Technologies, right? It is for the procurement of 212 advanced 50-ton tank transporter trailers. Take a note of this, right? So, to transport 50-ton tanks and other armored vehicles across varied terrains, this MOU was signed. Next, identify the company that announced the launch of the first commercial satellite mission launching expeditions for aspiring payloads, that is LEAP-1 mission. This was using the SpaceX Falcon 9 rocket that carried them into space in the third quarter of 2025. So question is, identify the company that announced the launch of their first commercial satellite mission, that is LEAP-1. It is Dhruva Space. Next, students, is our homework section. First question, tell me recently Australia, they banned the YouTube for children of what age? Second question, what is the current account deficit of India? Fourth question, recently who has been appointed as the Vice Chief of Army Staff and who he will be succeeding? Fourth question, for Echo brand, who has been appointed as the brand ambassador? And for from Echo and for Levi's also, tell me, both of them, who are the individuals who has been appointed as the brand ambassador here? Tell me then who has been appointed as the director of Vikram Sarabhai Space Center. These are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Okay, write one more question, that is LEAP-1. This LEAP-01 mission is of which organization and what is this mission all about, and the full form also of this LEAP mission.
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 और 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेमिकॉन इंडिया की, जो न्यू दिल्ली में हुई, जहां पे विक्रम 32 इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इनॉग्रेट किया गया। देन हम बात करेंगे इंडिया के बर्थ एंड डेथ रेट्स के बारे में। फिर बात करेंगे अग्निकार 2025 कैंपेन जो अभी लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, क्यों किया गया उसको डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो डिसबर्समेंट है लोन का, वो हमें ड्रॉप होता हुआ दिखा, वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर, तो एंड तक बने रहिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव एंड नेबर्स सभी के साथ। स्टूडेंट्स, हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे बहुत ही रिफाइंड वे में एंड बेनिफिशियल होता है आप सभी के लिए, ताकि आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इनका थर्ड टर्म है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ये भी चाइना में विजिट पे थे फॉर एससीओ समिट, राइट, जहां पर इन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करी। देन अभी वापस आकर इन्होंने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2025 को। ये 4th एडिशन है सेमिकॉन का, पहले तो ये याद रखेंगे। सेमिकॉन क्या है? बेसिकली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, क्योंकि ये वो चिप्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझो कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ये यूज होती हैं। और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी ग्रोथ पे है। तो अगर हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होंगी एंड अगर हम उनको इंडिया में नहीं बनाएंगे तो हमें दूसरी कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उनके हिसाब से प्राइसिंग हमें देखना पड़ेगा, उनकी डिमांड के हिसाब से हमें सामान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज अगर हम इन हाउस कर दें मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो डिपेंडेंस है वो खत्म होती हुई दिखेगी। बल्कि जब हम अपनी इन हाउस डिमांड को पूरी करेंगे उसके बाद हम इन चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कमांड होता हुआ दिखेगा। इसीलिए आप देखेंगे गुजरात को इंडिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे जाना जाता है। इवन डोलेरा में टाटा काफी बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट एस्टैब्लिश कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले याद रखो कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया चौथा एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया। कहां पर हुआ? यशोभूमि में हुआ, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी थीम क्या रहेगी? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ये जो इवेंट था 2 से 4 सितंबर तक हमें देखने को मिला था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था ये भी याद रखेंगे, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, MEITY एंड SEMI। ये क्या है? सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल, राइट, ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है एसोसिएशन। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे यहां पर पहली मेड इन इंडिया चिप अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंडिया 32। ये 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है। फिर इसी के अलावा 13 मेजर अनाउंसमेंट की गई, जहां पे हम देखेंगे इनिशियल फंडिंग कमिटमेंट ऑफ $1 मिलियन का यहां देखने को मिला, कई सेक्टर्स में देखने को मिला। इसी के अलावा जैसा भी मैंने बताया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि धोलेरा में गुजरात में एक प्लांट सेटअप कर रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, फैब्रिकेशन यूनिट रहेगा। इन्होंने MOU साइन किया भी रिसेंटली मर्क के साथ, MERCK। ये एक आपकी ग्लोबल लीडर है मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एंड सॉल्यूशंस में। इनके साथ सप्लाई चेन, मटेरियल्स, वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, मार्क करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, ये 4th एडिशन है। पहला एडिशन बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ 2022 में, सेकंड एडिशन गांधीनगर गुजरात में हुआ 2023 में, ग्रेटर नोएडा में इसका 3rd एडिशन देखने को मिला था लास्ट ईयर 2024 में, एंड अब सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि चौथा एडिशन है 2 से 4 सितंबर तक हुआ यशोभूमि न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं SRS 2023 की रिपोर्ट। ये बेसिकली बताती है कि इंडिया की बर्थ एंड डेथ रेट को यहाँ पे मेन फोकस रखेंगे, राइट। इसमें देखेंगे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा बर्थ एंड डेथ हुए, किस में सबसे कम हुए। तो सबसे पहली बात करेंगे SRS क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एंड ये बेसिकली रिलीज की गई बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जो दिखाता है कि इंडिया के बर्थ एंड डेथ रेट से डिक्लाइन कर गए टू नियरली 50% कंपेयर टू 1971 के हिसाब से। यहीं पे अगर हम देखें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी ड्रॉप कर गया टू रिकॉर्ड लो, जो कि है सिर्फ 129 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, राइट। इसी के अलावा अगर हम देखें जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखनी है वो है बर्थ रेट। टॉप 5 स्टेट्स कौन सी है बर्थ रेट में? बिहार ने टॉप किया यहाँ पे बर्थ रेट में, सेकंड पे आ जाती है यूपी, 3rd राजस्थान, 4th मध्य प्रदेश एंड 5th छत्तीसगढ़। फिर आ जाती है बॉटम 5 स्टेट्स देखें तो अंडमान एंड निकोबार लोएस्ट पे है, फिर इसके बाद केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड सो ऑन। ये था बर्थ रेट्स का डाटा। यहीं पे अगर हम डेथ रेट्स की बात करें तो टॉप पर है छत्तीसगढ़, फर्स्ट पे आ जाता है, राइट। एंड अगर हम बॉटम में देखें तो चंडीगढ़ बॉटम पे है विद द डेथ रेट्स। तो ये 2-3 चीजें आपको मार्क करनी है, पता होनी चाहिए।
मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने अग्निकार 2025 कैंपेन को लॉन्च किया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। देखो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये स्कीम क्या कहती है कि पक्का हाउसेज यहाँ पे लोगों तक पहुंच सके, अफोर्डेबल हाउसेज लोगों को मिल सके, कोई कच्चे घर में ना रहे। 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता धरता है यहाँ पर। फिर अभी ये जो टारगेट था ना इसका 2022 था, डेडलाइन थी कि 2022 तक हमें स्कीम को पूरा करना है। फिर इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया जिसकी डेडलाइन रखी गई 31 दिसंबर 2025, राइट। एंड अब ये अग्निकार कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन का बेसिक एम क्या रहेगा, घर घर तक जाएंगे लोग एंड कैंपेन्स होंगे, बहुत सारी वर्कशॉप्स हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर, बहुत सारे आपके कैंप्स होंगे, लोन मेलाज होंगे, राइट। इसी के अलावा कई सारे और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हैं अग्निकार इवेंट मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इसका ड्यूरेशन रहेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एक पीएम आवास मेला शहरी जो कि 17 से 27 सितंबर एंड 16 से 31 अक्टूबर तक होगा। एंड प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आवास दिवस ऑब्जर्व किया गया 17 सितंबर को, राइट। ये पहली एनिवर्सरी थी ऑफ दिस 2.0 इनिशिएटिव की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, म्यूचुअल फंड फाइनेंस, ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं एमएफआई, एंड एमएफआईएन क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क इंडिया, राइट। तो इनके द्वारा यहाँ पे जो डिसबर्समेंट है लोन्स की वो 24% ईयर ऑन ईयर घटती दिखी टू 22,805 करोड़ रुपए इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। यहीं पे हम देखें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 1.34 लाख करोड़ का, करेक्ट। वो भी यहाँ पे घटता हुआ दिखा 16.4% से। वहीं पे जो क्लाइंट बेस अगर हम देखें वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया टू 3.8 CR जो कि पहले 4.5 CR था। इवन जो डेट फंडिंग हमें रिसीव हुई वो है 12,781 करोड़ की इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। एंड ये 54th एडिशन है आपका माइक्रोमीटर का जो कि रिलीज किया गया अभी इनके द्वारा। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें जो डेट फंडिंग है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, इन्होंने रिसीव किया टोटल ऑफ 12,781 करोड़ रुपीस इन डेट फंडिंग जो कि 19.9% का डिक्लाइन है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। डेट ब्रेकअप देखें तो बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया टू 81.9% ऑफ द टोटल बोरोइंग। वहीं पे नॉन बैंकिंग एंटिटीज कंट्रीब्यूटेड 8.4%, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटेड 3.6, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 3.5, रेस्ट 2.6, राइट। तो ये मार्क करके चलेंगे चीजें। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं अमेजॉन। स्टूडेंट्स याद रखेंगे अमेजॉन ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है एक्जियो को, राइट। कितने अमाउंट के लिए, $200 मिलियन के लिए ये एक्विजिशन हुई है। $200 मिलियन हम बोले तो मोटा मोटा 1,762 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इनको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है कि ये अब अमेजॉन यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है, लोन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है ऑन देयर अमेजॉन पे, राइट, अमेजॉन पे के बदौलत। तो ये दो चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि एक महारत्ना PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने 10 साल का एक MOU साइन किया है सिंगापुर बेस्ड हॉरिजॉन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन्स को। देखो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स ये मार्क करके चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ना यूसेज बहुत ज्यादा एज अ फ्यूल इंडिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक क्लीन फ्यूल है, राइट। एंड इसके बर्निंग पे वाटर वेपर निकलता है, वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलते हैं। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे जो आपका ये हाइड्रोजन है, राइट, इससे रिलेटेड बसेस लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? ये बसेस लॉन्च की गई थी लेह लद्दाख में, एंड ये बसेस को NTPC के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड यहीं पे अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन्स को भी लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए। पॉल्यूशन सिग्निफिकेंट रिलीज कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वहीं पे सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है, उसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। सो मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है NGEL जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इनके द्वारा जो कि एक सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है VOC पोर्ट के साथ, राइट। एंड ये MOU साइन किया गया किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन के लिए, जो कि तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो फिर देखो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन मतलब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा, बनाया जाएगा एंड रिफ्यूल किया जाएगा जहां पे भी उनको जरूरत है। तो अगेन ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए, इसको जरूर समझेंगे। फिर आ जाते हैं इसके बाद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। हम बात कर रहे हैं NRIF रैंकिंग की, ये 10th एडिशन है NRIF रैंकिंग का। NIRF क्या होता है? NIRF आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट। इसका इवेंट कहां पर हुआ था? भारत मंडपम में हमें देखने को मिला था।
तो सबसे पहली चीज, ये 10वीं रैंकिंग है NIRF की, 10वां एडिशन है, राइट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में यहाँ पे 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम टॉप किया। मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, जैसे ओवरऑल कैटेगरी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो IIT मद्रास ने टॉप किया, सेकंड IISc बेंगलुरु, थर्ड IIT बॉम्बे, फोर्थ IIT दिल्ली। वहीं पे अगर हम बात करें ये इंस्टीट्यूट्स हैं आपके किस लिए, ये तो था ओवरऑल रैंकिंग का, यहां पर आ जाता है ये यूनिवर्सिटी वाइज। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज IISc बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू सेकंड, थर्ड मणिपाल, फोर्थ जामिया एंड फिफ्थ DU। यहीं पे अगर आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉलेजेस के हिसाब से किसने टॉप किया, तो हिंदू कॉलेज ने टॉप किया, ठीक। फिर इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का पूछा जाए तो IISc बेंगलोर ने टॉप किया। इंजीनियरिंग का पूछा जाए तो IIT मद्रास ने टॉप किया। मैनेजमेंट के लिए पूछा जाए तो IIM अहमदाबाद ने टॉप किया। इसके बाद फार्मेसी का आ जाए तो जामिया हमदर्द ने टॉप किया। इसके बाद मेडिकल का आ जाए तो एम्स दिल्ली ने यहां पे टॉप किया, ठीक। फिर इसके बाद अगर डेंटल का आ जाए तो एम्स दिल्ली ने टॉप किया। लॉ का आ जाए तो NLU ने टॉप किया। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग आ जाए तो IIT रुड़की ने टॉप किया, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। एंड्रयू माइकल हॉलनेस, इनको रिलेक्ट किया गया जमाइकन प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टर्म, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, मार्क करके चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। डेसॉल्ट एविएशन, इन्होंने 2% स्टेक बाय कर लिए हैं DRDL में, जो कि है डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, टू 51% स्टेक हो गया, राइट। एंड ये जो 2% स्टेक बाय किया गया है 176 करोड़ रुपीस का यहाँ पे बाय करा गया है, ठीक है। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर के पास अब कितना स्टेक है, 49% का स्टेक है। डसेल्ट एविएशन के पास अब कितना परसेंट स्टेक है, 51% यहां पर स्टेक रहेगा। चलिए फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। चाइना ने अभी JL-1 एयर लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, ALBM, राइट। एंड 2025 की चाइना विक्ट्री डे परेड के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये पहला पब्लिक डिस्प्ले था ऑफ दिस एयर कंपोनेंट ऑफ दिस चाइनाज न्यूक्लियर ट्रायड। मार्क करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप की। ये 11th एडिशन रहेगा इस एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर होगा, तो ये अहमदाबाद गुजरात में देखने को हमें मिलेगा। एंड अहमदाबाद गुजरात में ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भी बिडिंग की गई है इंडिया के द्वारा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी मार्क करेंगे। देन मनसुख मांडविया जी के द्वारा यहाँ पे मैस्कॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम है जलवीर। एंड लोगो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है लोगो जो कि एक लायन का है। यहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं इसमें शोकेस किए गए हैं, तो ये आपका लोगो रहेगा। मैस्कॉट जलवीर लोगो यहां पर आप देख सकते हैं। 1000 से भी ज्यादा एथलीट्स यहां पे फ्रॉम 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। एंड ये क्वालिफाइंग इवेंट रहेगा 2026 के एशियन गेम्स के लिए, राइट। ये कब से कब तक होगा, 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हमें देखने को मिलेगा, 11वां एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ऑफ द इंडियन आर्मी, इन्होंने लॉन्च की एक बुक ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। इस बुक को ऑथर किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लोन जी, जो कि है लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लोन, जो कि रिटायर्ड है, इनके द्वारा मानेकशा सेंटर में इसको लॉन्च किया गया था इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पे पब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ड्यूशेनी अवेयरनेस डे 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ड्यूशेनी बेसिकली एक तरीके की जेनेटिक डिजीज होती है, राइट। ये काफी वीक कर देती है मसल्स को, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार 7 सितंबर को हमने इसका सेकंड डे ऑब्जर्व किया। इसकी थीम याद रखेंगे, फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज पर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने अभी TCS के साथ पार्टनर किया ताकि डिजाइन किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके IFMS 3.0, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसको डिजाइन किया जाएगा इनके द्वारा। इससे हम देखेंगे कि जो पब्लिक फाइनेंस का है उसमें वर्कफ्लोज बेटर होंगे, प्रिसीजन बेटर होगा, ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी, एंड ऑफिशियल्स को एम्पावर किया जाएगा विद AI असिस्टेड इनसाइट्स फॉर कॉन्फिडेंट डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। मार्क करके चलेंगे ये सारी चीजें स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी रिवीजन और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, राइट। एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे कंटेंट को आपको पब्लिश करेंगे एंड आपको प्रोवाइड कराएंगे। 31 जुलाई को यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया एडिशन आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021 से 2026 तक। तो 1920 करोड़ रुपए का यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये एडिशनल अमाउंट अलोकेट किया गया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन 31 जुलाई द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड the 4 multi-tracking projects under the Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore रुपए. Which of the following is not among the 6 covered under these projects? अगर यहाँ पर हम देखें तो यूपी यहाँ पे इसमें कवर नहीं होता है फॉर इन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, बाकी सभी कवर्ड है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इन्होंने अप्रूव की सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि है ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका आउटले रहेगा कितना 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे ये आउटले रहेगा फॉर FY26 टू FY29 एंड ये 4 साल के लिए यहाँ पे लाई गई है. फिर आ जाते हैं वेयर वॉज इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल ऑन 31 जुलाई. तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था ये? तो ये गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है, इसको मार्क करके चलेंगे. L&T के द्वारा इंजीनियरिंग सपोर्ट इनका प्रोवाइड कराया गया. इनका हेडक्वार्टर आ जाता है चेन्नई तमिलनाडु में. नेक्स्ट नेम द मिशन जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा अगस्त के महीने में थ्रू रीजनल प्रोसेस लैब्स इन देहरादून एंड भुवनेश्वर टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज अक्रॉस इंडिया. तो उस मिशन का नाम पूछा गया है आपसे. यह है आदि कर्मयोगी अभियान. बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके. एंड इस इनिशिएटिव के अंदर 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज एंड विलेज लेवल चेंज लीडर्स को बनाया जाएगा जो कि यहाँ पे फर्दर इस स्कीम को प्रमोट करेंगे एंड लोगों की हेल्प करेंगे ताकि एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस भी यहाँ पर आ सके ट्राइबल एरियाज में. नेक्स्ट इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जुलाई वाज कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क. ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था जो कहाँ पर है? जो है असम में. राइट, यहाँ पर ये आपका पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस देखने को मिला था इंडिया का. नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाराणसी यूपी ऑन 2 अगस्त. अगर यहाँ पे हम देखें ABC इसमें से तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A सही है, C सही है, B गलत है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया 37 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को अंडर जल जीवन मिशन. तो नहीं, 37 नहीं था, 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज द मैत्री 1 इनिशिएटिव जो कि एक 750 एकड़ का थीम बेस्ड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि जॉइंटली लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा. सो ये मैत्री 1 इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है. एंड अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रेजेंस था जब इन्होंने इसको लॉन्च किया गया था. राइट, एंड यहीं पे हम देखेंगे ये अरावली एरियाज में आ जाता है ऑफ गुरुग्राम हरियाणा. ठीक, चलिए नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड द मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि एक कंसोर्टियम है 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने लॉन्च की टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कंसोर्टियम. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी ये 8 कंसोर्टियम्स हैं जिनके द्वारा मिलकर ये टैक्सी सर्विस लॉन्च की जा रही है, इसमें से वो कौन सा कोऑपरेटिव नहीं है जो इसका पार्ट नहीं है. राइट, तो नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये इसका पार्ट नहीं है. और ये भारत ब्रांड नेम के नाम से ये टैक्सी सर्विस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है. 300 करोड़ का कैपिटल यहाँ पे दिया गया है. 200 ड्राइवर ऑन बोर्ड्स किए गए हैं, 50 हर स्टेट से फ्रॉम 4 स्टेट्स दिल्ली, गुजरात, यूपी एंड महाराष्ट्र. ये भी याद रखेंगे, दिल्ली, यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र से यहाँ पे ड्राइवर्स ऑन बोर्ड किए गए हैं. एंड एक और चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटिशन में आ गई है टू ओला एंड ऊबर. नेक्स्ट अंडर विच मिशन डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किए 7 इंस्टीट्यूट्स को जिसमें 4 IIT हैं एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स रहेंगी एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. तो अंडर विच मिशन? ये है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज नॉट अमंग द 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किए गए इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इन अगस्त जो अचीव करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर 9 पार्टनर कंट्रीज. तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड ग्रिड मैनेजमेंट. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 ट्रैकिंग द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रेंड्स इन द इंडियन स्टेट्स इन अगस्त 2025. तो पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिलीज की ये रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग के द्वारा. नेक्स्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल जो इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा इन न्यू दिल्ली ऑन 4 अगस्त. सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ. वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. नेक्स्ट एंड एक और चीज, यहाँ पे जो थीम थी ना जिसके अंदर ये फेस्टिवल हुआ वो था सप्ता सुर, मतलब 7 नेशंस 1 मेलोडी.
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेम द फर्स्ट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो ये है कर्तव्य भवन 03. फिर अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने 67,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को प्रपोजल्स को अप्रूव किया. तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे. नेक्स्ट, इन जुलाई इंडियन नेवी इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. ठीक है, तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, ये वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज की गई इनके द्वारा. पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक. तो इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है एंड हमने 211 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किए, जो कि 11.1% ज़्यादा है कंपेयर टू 2023. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री, जो कि 107वीं कंट्री बन गई जिन्होंने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया, वो है मोल्डोवा. ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में आ जाता है. आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है. पहले तो अजय माथुर थे, अब कौन है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द काउंटरपॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च इन अगस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 AI सिटीज ग्लोबली. तो यहाँ पे पेरिस ग्लोबली टॉप 5 में नहीं आता है. टॉप 5 में कौन सी सिटीज आती है? सबसे पहले आ जाती है टॉप पे सिंगापुर, देन सियोल ऑफ साउथ कोरिया, देन बीजिंग, देन दुबई एंड देन सैन फ्रांसिस्को. Next, students, is our homework section. First question, tell me recently Australia, they banned the YouTube for children of what age? Second question, what is the current account deficit of India? Fourth question, recently who has been appointed as the Vice Chief of Army Staff and who he will be succeeding? Fourth question, for Echo brand, who has been appointed as the brand ambassador? And from Echo and for Levi's also, tell me, both of them, who are the individuals who has been appointed as the brand ambassador here. Tell me then who has been appointed as the director of Vikram Sarabhai Space Center. These are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Okay, write one more question, that is LEAP 1. This LEAP 01 mission is of which organization and what is this mission all about, and the full form also of this LEAP mission.